Hello guys, I am Shubham from Tutorials. हम DBT के PYQs solve कर रहे हैं. This is the part 7 of the video. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. So first question for this session is, which of the following cloning vectors will you use to clone a 200 kilobase gene? Okay, 200 kilobase gene को clone करना है. So which vector we will use? So the answer is bacterial artificial chromosome, BAC, BACS. Okay. So you have to know the sizes of the different vectors. Okay. ये repeated topic है. You have to study this. Second, given below are two statements. One is labeled as assertion A, other is labeled as reason R. So what is assertion? Heat and extreme of pH cause denaturation or melting of double helical DNA. Okay, मतलब heat and जो pH है extreme of pH, इससे क्या होता है denaturation and melting of double strand DNA. So this is correct. Okay, reason for this, breaking of covalent bonds of DNA causes unwinding of the double helix. So this is the wrong statement. Why? Because covalent bonds break नहीं होते denaturation की वजह से. Hydrogen bonds between the purines and pyrimidines are broken, right? So not covalent bonds. So in the light of above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. Okay, so both A and R are correct. No, wrong. Both A and R are correct. No, A is correct, but R is not correct. Yes. Okay, A is correct, but R is not correct. Given below are two statements. This is from action potential. See, in a neuron at standard resting state of minus 70 millivolt, okay, negative charge, treatment with chemical X induced intracellular potential to minus 50 volt. Okay, while when treated with another chemical Y, it showed minus 70 volt. Given below, given such condition, we can say X induced depolarization while Y induced hyperpolarization. I will explain here in short action potential. तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, राइट, -70 एंड -90. यहाँ पे होता है पॉजिटिव. ओके, 30 रेगुलेटर 50 30. ओके, दिस आर पॉजिटिव. तो -70 से वी नो ऊपर जाता है डीपोलराइजेशन, देन लाइक दिस. So this is hyperpolarization, right? It crosses 90. ओके, so अभी x जो है x, दिस इज -50. ओके, -70 से ऊपर यहाँ पे कहीं होगा 50, राइट? तो दिस इज अ डिपोलराइजेशन. एंड जो -90 कर रहा है y, दिस इज हाइपरपोलराइजेशन. ओके, गॉट इट ना? इट इज इजी. हाइपरपोलराइजेशन मीन्स मोर नेगेटिव एंड डिपोलराइजेशन मीन्स लेस नेगेटिव. तो ये लेस नेगेटिव है, -50 लेस नेगेटिव. So this is depolarization, and more negative means -90. This is hyperpolarization, right? तो यहाँ पे भी ये statement तो 1 correct है. So let's see what is statement 2. In a neuron at standard resting state of -70 volts, treatment with chemical X induce intracellular potential to -50, while when treated with another Y, it showed 90. Same है यहाँ तक. Given such condition, we can say Y induced depolarization. So no, this is wrong. Y induced depolarization is wrong. Y ने क्या किया है? Hyperpolarization किया. So Y induced depolarization, X induced hyperpolarization. Okay, so ये wrong statement. So statement 1 is correct. So both are correct. No,
Both are incorrect. No. Statement 1 is correct. Yes. But statement 2 is incorrect. Yes. Statement 3 is again the okay. तो बेसिक जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको ये भी पता है एक्शन पोटेंशियल, देन ऑल्सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन. एक्शन पोटेंशियल इज important. Next question. A duplex DNA sequence that reads identically on both strands is known as. Very easy. मतलब 5 prime to 3 prime and then 3 prime to 5 prime. Okay. Read किया and this is identical on both the strands. This is known as palindrome. Okay, palindrome option 2. Right? Hemolytic disease of the newborn develops when maternal IgG antibodies specific for fetal group, blood group antigen cross the placenta and destroy fetal red blood cells. This disease is called what? Very easy. Erythroblastosis fetalis. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे चैनल पर, इसका वीडियो अवेलेबल है. यू कैन रिफर दैट. राइट. Hemolytic disease of the newborn. So what is this disease? Basically मैटरनल जो एंटीबॉडीज है IgG क्रॉस द प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. ओके, so this is specific against baby's blood group antigen. Right? Human genome contains approximately 25,000 genes. Okay, 25,000 genes है, but the numbers of protein in a human cell is estimated to be approximately 2,50,000. Which of the following can explain this difference? Okay, मतलब genes 25,000 है and proteins 2,50,000. इतना difference कैसे? Right? So what is the reason behind this? Alternative splicing and protein folding. Alternative splicing correct है, protein folding no. Post transcriptional silencing no. Multiple promoters no. Alternative splicing and post translational modification yes. Okay, alternative splicing and post translational modification की वजह से हमें varieties of protein we see. Very easy question. Binding site on an antibody is known as paratope. Okay, antigen पर जो बाइंडिंग सेट होती है दैट इज कॉल्ड एपिटोप. एंटीबॉडी पैराटोप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकली व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, अगर आपको पता है आप आंसर कर सकते. मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. लिस्ट 1 विद द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन इन द लिस्ट 2. तो यहाँ से एक भी अगर आपको पता है देन ऑल्सो यू कैन आंसर. हाउ इजीली? सी जो डी है, डी दैट इज जेल फिल्ट्रेशन. ओके, डी इज जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर दिस मॉलिक्यूलर साइज. ओके, तो D2 ये एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1. देन यू चेक विद द अदर्स. C4 मतलब C कोवैलेंट है. यस, थायराइड ग्रुप. ओके, करेक्ट. क्रोमेटोफोकसिंग जो B है दैट इज 1 चार्ज एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. यस, एंड जो डाई अफिनिटी है दैट इज स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोफोबिसिटी. तो ऑप्शन 1 करेक्ट. राइट. लास्ट क्वेश्चन. डैश में सर्वाइव विदाउट द नीड फॉर इम्यूनोसप्रेशन. मतलब इम्यूनोसप्रेशन करने की जरूरत नहीं है. तो लिवर ट्रांसप्लांट नो, इट रिक्वायर्स इम्यूनोसप्रेशन. कॉर्नियल ग्राफ्ट यस, इसको इम्यूनोसप्रेशन की जरूरत नहीं है. ओके, अगेन हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इसको भी इम्यूनोसप्रेशन चाहिए. बट जो कॉर्नियल मीन्स आई, राइट, रिलेटेड टू आईज. तो कॉर्नियल ग्राफ्ट सर्वाइव विदाउट इम्यूनोसप्रेशन. ओके, तो आ मोटो जो
behind solving these PYQs is that to make you understand how are the questions of DBT and how you can answer quickly with the help of options or simple concepts basically. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.